Hello everyone, welcome to ITLS Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session we will be starting with the course of stem cells. Since this is the first session, or rather I will be starting with the first topic, so you can see the topic for today's discussion will be introduction to stem cells. Okay, so again, since stem cells is a it's a broad topic, so if you look at the module of this course of stem cells, then you can see that in the first unit it's given as like what are stem cells, where are they found, who are they, how they can be utilized. So I have just clubbed all those questions in this I think 2 or 3 sessions I will take regarding this introductory part. Okay, because instead of writing that who are they, where are they found, etc., etc., it's easier to just club it into the topic of introduction to stem cells. Okay, so let's begin with the first session. So whenever I think this is something I've mentioned earlier also in some of the other courses that I have conducted on behalf of ITLS Academy, that is whenever we are talking or we are starting with a fresh new topic or a fresh new subject, a fresh new area, it's important that we have some amount of idea about the history, about the historical perspective or historical aspect of that particular subject. Okay, so here, since we are talking about stem cells, and stem cells are very much emerging or innovative field right now, talking about, particularly talking about medical research and life sciences research. So it's a evaluating field, means it's evaluating. Okay, it's a new, it's a budding field. ओके, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं. ओके, और अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है हमारे लिए. ओके, that's why these courses of stem cells are very they are in very high demand nowadays. Various organizations are there who are conducting these courses of stem cells. So in ITLS Academy, what we try to impart among our students is to impart the basic idea and the concepts, because whenever we are talking about a particular topic, specifically a topic like stem cell, which is very much evaluating and very much innovative with respect to research point of view, or technological development point of view, scientific development point of view. So it's important that we are able to impart that that significance or that importance of that particular topic among our students. Okay, because information giving, PDFs giving, PPTs, that can be done by anyone, or that is actually done by all the various other institutes. But in ITLS, what we try to do is we try to impart that that unique conceptual knowledge among our students. Okay, so anyways, so starting with the historical perspective of stem cells, so we can see that the first historical milestone in stem cell research or in the field of stem cell, it dates back to 1998. Okay, now it can sound as very old, 1998, but actually if we think it from scientific point of view, from research point of view, then 1998 is recent only. 1998 means it's not even 30 years, isn't it? So 30 years is young only in with respect to scientific development or scientific discovery. Okay, so the first milestone dates back to 1998, when the researchers for the first time they extracted stem cells from human embryos. Okay, and then the next milestone is in the next year only, that is 1999, where the first successful human transplant of insulin making cells was done from cadavers. Okay, cadavers as in the dead bodies. Okay, so basically from dead bodies they extracted the pancreas, and we all know that the pancreas synthesizes and secretes a very important hormone, that is insulin, which is again very important, or rather it's a prerequisite for maintaining the normal sugar level in our blood. Okay, so that insulin making cells were transplanted from those cadavers or dead bodies to a human, to a living human. Okay, so that was again a milestone. Third milestone will be in the year 2001,
when President Bush restricts the federal funding for embryonic stem cell research. Okay, so that is again, it is a milestone obviously, but it is to some extent a limitation or a drawback we can say, because it actually put an arrest to stem cell research. Because when we talk about stem cell research, I will be talking about in details in the upcoming sessions of this course, that stem cell research is something which arises many ethical questions. Okay, and particularly when we talk about research regarding the adult stem cells and also the embryonic stem cells. Because why embryonic stem cells means they will be isolated from the embryo. Okay, so obviously it will be isolated from those embryos which will be discarded, okay, which will be aborted, or rather medically terminated embryos. But still, since it's a living thing, it's a living being, it has the potential to grow into a into an entire human being or an entire whole organism. So there are many questions still now, at this point of time, also standing in 2025, also there are many people, there are many scientists rather, who actually oppose this entire concept of doing research utilizing embryonic stem cells, simply because of the fact that they are isolated from embryos, and they believe that each and every embryo, no matter whether it is defective or not, has a potential to grow into a individual organism. Okay, so that's why the restriction. Okay, so the next milestone will be again next year, 2002, when Juvenile Diabetes Research Foundation International, it creates around $20 million fundraising effort to support stem cell research. Next in 2002, California OK Stem Cell Research. Next, in 2004, Harvard researchers grow stem cells from embryos using private funding. And in 2004, again, we have ballot, which measures for around $3 billion bond for stem cells. Okay. Now, these dollar figures, this $1 million, etc., etc., these are important because any kind of research, particularly medical research, research in the medical field, research in the life sciences field, it's something which is costly. It is cost effective also, but we need a huge amount of fund, a huge amount of money for that, for successful completion of research, particularly when we talk about sophisticated or modified research like stem cell research. Okay, now when we talk about stem cells, moving on to the next slide, so what do you actually mean by stem cell? So these cells, they have the ability to continuously divide and differentiate into various other kinds of cells or tissues. So basically these are unspecialized cells, as they are saying in the next point, blank cells or unspecialized cells, मतलब कि उनमें कोई मतलब पहले से तय नहीं किया हुआ है कि ये सेल जाके ये बनाएगा. Okay, which is normally the scene in most of the cells inside our body, isn't it? Cardiac cells मतलब वो heart ही जाके बनाएगा, liver cells में hepatocytes मतलब वो जाके liver ही बनाएगा, isn't it? So these stem cells, they are actually unspecialized. ओके तो उनमें कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए वो डिवाइड करके कोई भी सेल बना सकता है, एंड दे हैव दिस पोटेंशियल टू कंटिन्यूअसली डिवाइड. Okay, there is no limitation, so they have this renewal property, self renewal property, which is very important, and also self replicating. Obviously self renew matlab replicate karega tabhi na wo renew hoga, isn't it? So these are the two main unique features of stem cells. Okay, so as we can see, if this is a single stem cell that we are talking about, then this cell एक तो ये replicate कर सकता है अपने आप, self renew कर सकता है अपने आप, and secondly it can differentiate into different types of cells. तो देखो ये एक ही स्टेम सेल से मुझे बोन सेल्स मिल सकता है, मुझे फैट सेल्स मिल सकता है, मुझे नर्व सेल्स मिल सकता है, मुझे ब्लड सेल्स मिल सकता है. ओके, सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टेम सेल्स. एक तो वो सेल्फ रिन्यू या सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, और दूसरा इट कैन, सिंस इट्स सेल्फ अनस्पेशलाइज्ड सेल, so it can therefore go and differentiate and produce different other types of cells. Okay, now talking about the types of stem cells. Now types of stem cells बहुत सारे होते हैं, ठीक है. Again in the second session of this introductory part I will be talking about in details about each of those types. So अगर हम broadly types के बारे में बात करेंगे, तो एक हमारा embryonic stem cell हो जाएगा, एक हमारा adult stem cell हो जाएगा, और एक हमारा progenitor stem cell हो जाएगा, ठीक है. So embryonic मतलब जो हमें embryo से मिलेगा,
again they will be having the capacity of self renewal or self replication, and they can differentiate into all tissue types. मतलब अगर मेरे पास एक एम्ब्रायनिक स्टेम सेल है तो उससे मैं हर कोई टाइप का सेल बना सकती हूँ। मैं चाहे तो मैं कार्डियक सेल बना सकती हूँ, मैं लीवर सेल बना सकती हूँ, मैं स्टोमक का सेल बना सकती हूँ, मैं नर्व सेल बना सकती हूँ, एनी टाइप ऑफ सेल। ओके, एंड देन वी हैव एडल्ट स्टेम सेल जो कि नॉर्मल टिश्यू में मिलता है। again it has self renewal capacity, but it can differentiate into cells of the same lineage. Now this is very important. same lineage मतलब क्या, कि अगर मेरे पास एक एडल्ट स्टेम सेल है तो उससे मैं से फॉर एग्जांपल आई कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल का डिफरेंट टाइप्स मैं बना सकती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि उससे मैं ब्लड सेल भी बना सकती हूँ, उससे मैं नर्व सेल भी बना सकती हूँ, उससे मैं हार्ट सेल भी बना सकती हूँ। नो, एक lineage का सेल का all types of cells I can make. So that is the basic difference between embryonic stem cell and adult stem cell. And ये basic difference से हमें ये भी मालूम चल रहा है या पता चल रहा है that when with respect to research point of view के research के लिए हमारे लिए ज्यादा helpful कौन सा type of stem cell होगा? Obviously the embryonic stem cells, isn't it? Because उससे हमें कोई भी type of cell मिल सकता है, isn't it? So embryonic stem cells are more preferred than the adult stem cells as far as research purpose is concerned. Okay. Okay, now if we talk about the nature or the features of stem cells, okay, this can also, you can refer to it as a type of classification of stem cells also. Okay, so let's see in the table what they are saying. एक तो होता है totipotent nature, एक होता है pluripotent nature, एक होता है multipotent nature. Okay, so totipotent मतलब क्या? Each cell can develop into a new individual. ठीक है, मतलब एक सेल से हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, दैट इज टोटिपोटेंट स्टेम सेल। एग्जाम्पल क्या होगा? सेल्स फ्रॉम अर्ली एम्ब्रायो। अर्ली एम्ब्रायो मीन्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म सेल एंड द एग और द ओवम जो हमारा बनता है, दैट इज आवर अर्ली एम्ब्रायो। ओके, तो अर्ली एम्ब्रायो से क्या होता है? अर्ली एम्ब्रायो से धीरे धीरे डिवीजन होते होते एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, isn't it? So वो जो अर्ली एम्ब्रायो है उसको हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल बोल सकते हैं, क्योंकि उसी अर्ली एम्ब्रायो से एक पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बन रहा है, isn't it? तो ये हो गया टोटिपोटेंट। उसके बाद आएगा प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट मतलब क्या? सेल्स कैन फॉर्म एनी सेल टाइप। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हम कोई भी टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा? जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस। सो एम्ब्रायोजेनेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस विच गोज ऑन इनसाइड द वूम्ब ऑफ अ मदर व्हेन शी इज एक्सपेक्टिंग। सो एंटायर जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है, द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी 9 months, उसमें जो 3 सेमेस्टर्स में इट्स डिवाइडेड, three trimester में it's divided and each trimester is of 3 months. So total we are having 9 months. तो ये जो पूरा 9 months का period होता है इसको हम gestation period बोलते हैं, and during this period this process of embryogenesis occurs and it starts right from the embryo and it ends right at the time of birth जब हमारा baby fully developed है। ओके, तो इन दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस देयर आर वेरियस स्टेप्स। एम्ब्रायो जो है वो डिवाइड करते करते डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड स्टेजेस बनाते हैं। सो वन सच अर्ली स्टेजेस रादर इज ब्लास्टोसिस। तो ब्लास्टोसिस स्टेज तो होता है, इट ऑकर्स अराउंड 5 to 14 days of fertilization, means after fertilization, after say 2 weeks of fertilization your blastocyst will be formed। तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लूरिपोटेंट सेल, क्योंकि उससे हम कोई भी टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। Okay, and lastly what we have is multipotent stem cells means they are already differentiated but they can form a number of other tissues। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सेल हम उनसे बना सकते हैं, क्योंकि वो प्राइमरीली एक डिफरेंशिएशन उसका ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हम बहुत सारे टिश्यूज उससे बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हमारा फीटल टिश्यू, cord blood as an umbilical cord blood, and the adult stem cells also। Okay, so these are the 3 main types of stem cell you can say, or 3 main features of stem cells: totipotent, pluripotent and multipotent। totipotent से हम कुछ भी बना सकते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल बना सकते हैं। pluripotent से हम बहुत सारे टाइप्स के सेल्स बना सकते हैं, ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ सेल। एंड मल्टीपोटेंट से हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेल्स ही बना सकते हैं। ओके,
Moving forward, so this slide is basically giving you an idea about what are the basic differences between adult stem cells and embryonic stem cells. Okay, so if we talk about, let's first focus on the upper part of this diagram. So if we first focus about on the embryonic stem cells, तो embryonic stem cells को हम totipotent भी बोल सकते हैं, pluripotent भी बोल सकते हैं, depending on the stages. Okay, so embryonic stem cells मतलब, as I mentioned, कि it's referring to the stem cells which can be isolated from the embryo. ओके तो एम्ब्रायो हमारा कैसे बनेगा? सबसे पहले जाइगोट बनता है, वी ऑल नो, जस्ट आफ्टर द यूनियन, राइट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द स्पर्म सेल एंड द ओवम, वी हैव द जाइगोट. जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट के एग्जैक्टली नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज मोड्यूला. ओके, और ये स्टेज कैसे बन रहा है? सिंपली बाय माइटोसिस. द जाइगोट इज डिवाइडिंग, देन अगेन द मोड्यूला इज डिवाइडिंग, और धीरे धीरे हमारे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके, तो मोड्यूला हो गया. तो ये जो जाइगोट से मोड्यूला तक का जो स्टेज है, इसको हम टोटिपोटेंट बोलेंगे, क्योंकि ये कोई भी टिश्यू बना सकते हैं इंक्लूडिंग प्लेसेंटा. इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द प्लेसेंटा. तो अगर हम जाइगोट या मोड्यूला स्टेज से कोई एक सेल आइसोलेट करते हैं, तो उस सेल से हम कोई भी टिश्यू बना सकते हैं. ओके, तो इसलिए इसको हम टोटिपोटेंट बोलेंगे. मोड्यूला के बाद वाला जो स्टेज आएगा दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. ओके, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एक पर्टिकुलर फीचर रहता है दैट इज ICM, जिसका फुल फॉर्म है इनर सेल मास. ओके, तो ये जो बना हुआ है ना मधुमक्खी की नेस्ट की तरह जो दिख रहा है, दैट इज बेसिकली द ICM. तो ये ICM से हम जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं, उसको हम एम्ब्रायनिक स्टेम सेल बोलते हैं. ओके, एंड दीज एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कैन गिव राइज टू डिफरेंट लेयर्स. व्हाट आर द लेयर्स? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. इन विट्रो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम इस एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को लैब में ले जाके कल्चर करेंगे, इन विट्रो मीन्स इन लैब, नॉट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एंड इन विवो मीन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. ओके, तो अगर इसको हम इन विट्रो कंडीशंस में कल्चर करेंगे, देन दिस ESCs कैन गिव राइज टू ऑल दिस germ layers. These are the different germ layers. Okay, germ layers as in each of these layers will give rise to different organ systems in our body. Okay, तो ये जो ब्लास्टोसिस स्टेज है, ब्लास्टोसिस स्टेज का ये जो ICM है, इनर सेलुलर मास या इनर सेल मास, इससे हम आइसोलेट कर सकते हैं embryonic stem cells, and those stem cells will be pluripotent. Okay, and they can again give rise to any tissue inside the embryo but not placenta. तो totipotent और pluripotent nature जो है, if you are talking about the embryonic stem cells, then उनमें basic difference यही है कि totipotent stem cells placenta बना सकते हैं along with making other types of tissues, but pluripotent cells cannot make the placenta. That is the basic difference. Okay, उसके बाद हम आ जाते हैं in the lower part of the diagram, जहाँ पे हम adult stem cells के बारे में बात करेंगे. तो एडल्ट स्टेम सेल्स को हम सिर्फ मल्टीपोटेंट बोल सकते हैं, उनको हम ना तो टोटिपोटेंट बोलेंगे ना तो प्लूरिपोटेंट बोलेंगे. ओके, मल्टीपोटेंट मतलब क्या? दे कैन फॉर्म मल्टीपल सेल टाइप्स विद इन अ पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और फिजियोलॉजिकल सिस्टम. मतलब वो एक ही बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स या टिश्यूज वो बना सकते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली द जॉब ऑफ द डिफरेंट जर्म लेयर्स विच आई ऑलरेडी मेंशन. तो पहले हमारा एक्टोडर्म आएगा जो एकदम बाहर के तरफ होगा, फिर मेसोडर्म आएगा जो एकदम बीच में होगा, और फिर एंडोडर्म आएगा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा. ओके, दीज आर ऑल द जर्म लेयर्स. ठीक है, अब ये जो सीन है, दिस इज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो दैट इज वाई इन विवो लिखा हुआ है. ठीक है, तो जो एक्टोडर्म है दैट विल गिव राइज टू आवर ब्रेन, दैट विल गिव राइज टू आवर स्किन. मेसोडर्म क्या करेगा? मेसोडर्म विल गिव राइज टू आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट विल ऑल्सो गिव राइज टू आवर स्केलेटल सिस्टम, मसल्स. ओके, एंड एंडोडर्म क्या करेगा? इट विल गिव राइज टू आवर लीवर, इट विल गिव राइज टू आवर ईयर, नोज एक्सेट्रा. ओके, सो अलग अलग हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है, तो वो उस हिसाब से अपना अलग अलग टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. तो इसलिए एडल्ट स्टेम सेल्स को हम सिर्फ मल्टीपोटेंट ही बोल सकते हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टेम सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो सबसे ऊपर या सबसे पहले क्या आएगा? टोटिपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि उससे हमें कुछ भी मिल सकता है, isn't it? And also they can form copies of themselves. इसलिए देखो, जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल से जो एरो दिया हुआ है, एक तो वो टोटिपोटेंट से प्लूरिपोटेंट बना सकते हैं, और वो टोटिपोटेंट से टोटिपोटेंट भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज स्टेम सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो यही है, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन या सेल्फ रिन्यूअल. तो वो एक तो वो दूसरा सेल भी बना सकता है, और उसके साथ साथ वो अपने आप को भी फिर से बना सकता है. ओके,
So what they're saying over here regarding the totipotent stem cell, these cells have unlimited capability and have the ability to form extra embryonic membranes and tissues. Extra embryonic as in those membranes or those tissues which are present outside the embryo. Say for example the placenta. Okay, the embryo itself and all post embryonic tissues and organs. Post embryonic matlab kya? When the organism is fully developed. Okay, उससे आएगा pluripotent stem cell. These stem cells are capable of giving rise only to the tissues of an organism. Say for example inner cell mass, जो कि मुझे blastocyst stage में दिख रहा है. I have already shown that in the previous slide. Okay, and finally pluripotent से जो आएगा वो हमारा multipotent stem cells होगा, and these are committed to give rise to a specific cells which are performing a specific function. Say for example the blood stem cells. अभी blood stem cell से different types of blood cells बनेगा, जैसे RBC बनेगा, platelet बनेगा, WBC बनेगा. Okay, so multipotent stem cells can only give rise to a committed group of cells जिनका एक ही particular काम होगा. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हर कोई स्टेम सेल बना सकता है या हर कोई टाइप ऑफ सेल बना सकता है, बट ओनली विद इन द टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Okay, but totipotent stem cell is the only type of stem cell which can give rise to any type of cell, whether it's present in the embryo, whether it's not present in the embryo, or whether it's present in the post embryonic stages. Okay. Okay, now if we talk about the stages of embryogenesis, which I already briefly talked about. So सबसे पहले जो day 1 में होगा, that is the fertilized egg. What do you mean by the fertilized egg? Means the egg has been fertilized by the sperm. Sperm cell जो है वो egg को fertilize कर चुका है, मतलब this egg is containing its own nucleus as well as the nucleus of the sperm cell. ठीक है, उसके बाद day 2 में क्या होगा? Day 2 में we will be having a 2 cell embryo. तो दिस फर्टिलाइज्ड एग इज ओनली डिवाइडिंग इटसेल्फ एंड फॉर्मिंग अ 2-celled एम्ब्रायो, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है. ठीक है, उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट डे 3 और डे 4, देन वी विल बी हैविंग अ मल्टी सेल एम्ब्रायो, जिसको हम मॉड्यूला भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस एम्ब्रायो इज बेसिकली अंडरगोइंग माइटोसिस एंड फॉर्मिंग मल्टीपल सेल्स. उसके बाद डे 5 या डे 6, मतलब विद इन वन वीक वी विल बी हैविंग ब्लास्टोसिस्ट. सो मॉड्यूला और ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस यही है कि इन ब्लास्टोसिस्ट वी आर हैविंग अ कैविटी, जिसको हम द अदर नेम फॉर कैविटी इज सिल. ओके, सो इट्स दिस कैविटी इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोसिल. ओके, तो एक कैविटी बन जाएगा और जो सेल्स है वो एक तरफ आ जाएगा. ओके, और ये जो एक तरफ आया हुआ सेल्स है उसको हम बोलेंगे आईसीएम या इनर सेल मास. एंड देन फाइनली वी हैव डे 11 और 14, जिसमें हमारा टिश्यू डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा. Okay, so this blastocyst stage is very important as far as embryonic stem cells are concerned, because ये blastocyst stage में जो ICM layer होगा, इसी से मुझे हमें embryonic stem cells isolate करने को मिलेगा. Okay, so see exactly that's what they have shown in the next slide, that how will we derive or how will we obtain this embryonic stem cells. So this is the blastocyst stage of the embryo that we are having. सो दीज आउटर सेल्स, बाहर के तरफ जो सेल्स है ये हमारे प्लेसेंटा बनाएंगे, और जो इनर सेल मस है ये हमारे फीटस बनाएंगे. ठीक है, तो ये इनर सेल मस से हमें सेल्स निकालना पड़ेगा, एंड इन दैट प्रोसेस ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्ट्रॉय द एम्ब्रायो. दैट इज द मोस्ट अनएथिकल पार्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. ओके, तो एम्ब्रायो को डिस्ट्रॉय करके इनर सेल मास से हमें सेल सारे आइसोलेट कर लिए. अब उसको हमें कल्चर करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स इन विट्रो कंडीशन इनसाइड द लैब, वी हैव टू डू व्हाटएवर वी नीड टू डू. ठीक है, तो इसमें हमारा एक स्पेशल कल्चर मीडिया रहेगा ऑब्वियसली, और उसको हम अलग अलग कल्चर प्लेट्स में डिवाइड करेंगे, एंड ईच ऑफ द प्लेट्स विल बी गिविंग राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो एक से हम किडनी सेल बनाएंगे, एक से हम हार्ट मसल्स बनाएंगे, एक से हम लिवर सेल्स बनाएंगे, एक से हम पैंक्रियास सेल्स बनाएंगे, लाइक दैट. ओके, एंड देन दिस सेल्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर. से फॉर एग्जांपल हार्ट, if we can synthesize heart muscles or if we can synthesize heart cells, then obviously we can help it to for the treatment of any heart patient. किसी को congestive heart failure हो गया है, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं. किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी का कुछ valvular defect आ गया है. तो these are some of the things where we can actually utilize these stem cells. Okay, now if we talk about the potency of embryonic stem cells, potency as in what are the different types of cells that they can produce, that is the potency.
ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली सेम ही चीज दिखाया गया है कि ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, जिसमें जो इनर सेल मास है वहां से हम सेल्स निकाल लिए, फिर उसको हम कल्चर कर लिए, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करके, देखो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल कैन बी फॉर्म्ड। हम ब्लड सेल बना सकते हैं, हम चाहे तो हार्ट मसल बना सकते हैं, हम चाहे तो न्यूरॉन्स बना सकते हैं, हम चाहे तो पैंक्रियाटिक सेल्स बना सकते हैं, हम चाहे तो लीवर सेल्स बना सकते हैं, एंड देन वी कैन ट्रांसप्लांट दोज सेल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जिसको जो बीमारी रहेगा। अगर इस पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है तो लीवर सेल्स ट्रांसप्लांट कर दो, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट सेल्स ट्रांसप्लांट कर दो। ओके, इट लाइक सुनने में बहुत आसान लगता है, इट्स नॉट दैट मच इजी ऑब्वियसली, बट दैट इज द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। हाइपोथेटिकल पर्सपेक्टिव यही है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, वाई? बिकॉज हिमाटोपोएटिक मतलब हीम है, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी मतलब ब्लड। So the hematopoietic stem cells, they are basically the precursor of the blood cells. Hematopoietic stem cell से डिवीजन होते होते हमारे पास सारे ब्लड सेल्स आते हैं, चाहे वो WBC हो या प्लेटलेट हो या आरबीसी हो। ओके, सो दिस इज द प्रिकर्सर सेल दैट वी हैव, जिसको हम मल्टीपोटेंट हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल बोलेंगे, या उसका दूसरा नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट। ओके, सो अगेन सिंस इट्स अ स्टेम सेल, इट कैन सेल्फ रिन्यू, मतलब वो खुद को भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या बनाएगा, वो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर बनाएगा एंड कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनिटर बनाएगा। ओके, सो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है उससे क्या क्या बनेगा, it will divide and form the megakaryocyte, which will then eventually form the thrombocytes, means the platelets. उसके बाद वो erythrocyte बनाएगा, उसके बाद वो mast cell बनाएगा, and it will also make the myeloblasts. Myeloblasts क्या करेगा, myeloblasts will give rise to the basophil, neutrophil, eosinophil, means all the granulocytes. Okay, as well as the monocyte जाके बनाएगा macrophage, which is a very important immune cell, innate immune system का एक बहुत ही important पार्ट है दिस मैक्रोफाजेस। ओके, तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर से ये सारे सेल्स हमें मिलेंगे, और जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर है उससे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली लिम्फोइड मतलब लिम्फोसाइट बनाएगा वो। ओके, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, वी ऑल नो दैट, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिसमें से बी लिम्फोसाइट जाके हमारा प्लाज्मा सेल बनाएगा, बट और एक टाइप ऑफ सेल वो बनाएगा जो कि हमारा है लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट, दैट इज द नेचुरल किलर सेल। Okay, so that is how the division of the hematopoietic stem cells occurs. Okay, now if we talk about the potency of the adult stem cells, तो adult stem cells मतलब वो हम adult से isolate करेंगे, ठीक है, and they can differentiate into different cells, but obviously the differentiation is restricted, not like the embryonic stem cells, ठीक है। तो adult stem cells हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ से isolate कर सकते हैं, we can isolate from the brain. Okay, which are also known as the CNS stem cells, means the central nervous system, brain, and also from the spinal cord. ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशिएट करके ब्लड सेल्स बना सकते हैं, ब्लड वेसल्स बना सकते हैं। ओके, देन हम बोन मैरो से भी आइसोलेट कर सकते हैं, बोन मैरो से स्टेम सेल आइसोलेट करके हम वहां से लीवर बना सकते हैं, हम वहां से स्केलेटल मसल बना सकते हैं। ओके, Okay, now if we talk about the mesogenic process means the process where we are talking about the mesenchymal stem cells. Mesenchymal stem cells are also a part of different types of stem cells. They are basically adult stem cells. ठीक है, तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स जो है वो भी हमारे डिवाइड करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स दे सकते हैं, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस, ऑस्टियोजेनेसिस मतलब ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मेशन, कॉन्ड्रोजेनेसिस मतलब कार्टिलेज फॉर्मेशन, मायोजेनेसिस मतलब मसल फॉर्मेशन, मैरोस्ट्रोमा मतलब क्या, वो बोन मैरो बना सकते हैं, और टेंडोजेनेसिस है मतलब वो टेंडन बना सकते हैं, लिगामेंटोजेनेसिस मतलब वो लिगामेंट्स भी बना सकते हैं, एंड ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यूज। सो दीज आर द मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज जो हम mesenchymal stem cell से बना सकते हैं, and that is the mesogenic process. Okay, again potential of adult stem cells, something I have already discussed in the one of the previous slides, कि हम cardiac cell बना सकते हैं, हम bone बना सकते हैं, हम fat cells बना सकते हैं. Okay, okay, now if we talk about the applications of stem cells, obviously wide range of applications depending on what type of stem cells we are talking about, adult stem cells, yes, embryonic stem cells, but in general they are मतलब मेजर जो एप्लीकेशन होता है स्टेम सेल का, दैट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिजीजेस जिनका कोई क्योर अभी तक नहीं है।
ओके, क्योर अभी तक नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, डायबिटीज, ओके, लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ओके, जिनका कोई पर्टिकुलर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है आज तक, उनके लिए वी कैन जस्ट सिंपली यूज द स्टेम सेल्स टू ट्रांसप्लांट द सेल्स इनसाइड द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे हम माउस से एडल्ट स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं और उसको हम एक डैमेज्ड माउस हर्ट में हम उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन वी आर सीइंग दैट these stem cells are actually regenerating the heart muscles in that defective mouse. Okay, so I think that's it as far as introduction is concerned. In the next session also I will be, continuing with this introductory part only. I will be elaborating on different other types of stem cells. So till then, thank you and goodbye. Please like, share and subscribe ITLS Academy.